Hey guys, welcome to another video. So এই ভিডিওরে আমি OPSC ASO document verification और skill test বিষয়ে কথা হবা. So let's go to the first slide. First এই ভিডিওরে আমি ডিসকাস করিবা যে টাইমলাইন what was the timeline of 2019 examination. 2019 রে जो परीक्षा हेतिला से परीक्षा माने जो एग्जामिनेशन रो जो स्टेजेस अछि डिफरेंट केबे केबे हेतिला डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन केबे हेतिला स्किल टेस्ट केबे हेतिला सो दैट यू विल हैव ए आइडिया कि आपण हाथ केते समय अछि फॉर प्रिपेयरिंग फॉर स्किल टेस्ट ओके तापर हमें डिस्कशन करबा गोटे ब्रीफ डिस्कशन करबा अबाउट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और स्किल टेस्ट विषय कौन कौन हुए स्टेजेस केम थाए केमती क्वेश्चंस आसे कौन आसे से विषय भी डिस्कशन करबा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन विषय और लास्ट में आपको रिसोर्स देबी जो थरे कि आपण जाय कि कंप्लीटली जो हमरो पैकेज अछि एमएस ऑफिस आउ इंटरनेट विषय जहाँ जानिबा कथा जोटा एग्जाम रे आसीबार प्रोबेबिलिटी रही से सब जिनस को रिसोर्स फॉलो कले सेटा एग्जामिनेशन मु भाबुची बेस्ट हो बोली मु सेटा आपको सजेस्ट करबी रिसोर्सेस ओके सो लेट्स गो टू द फर्स्ट टाइमलाइन सो टाइमलाइन दबार उद्देश्य होची है जे आपको जणा पड़िबो जे केते समय आपन पाखरे अछि हमरो रिटन एग्जामिनेशन हेतला 20 जनवरी 2019 देन जो रिटन एग्जामिनेशन रो जो रिजल्ट सेटा समाने बाहर करथिले 29 अप्रैल 2019 सो एटी देखिबे पाखापाखी प्लस सो 3 मंथ्स प्लस रो गैप ही जाउची तो सही सेम नोटिस है समाने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन रो नोटिस दे देले कि द रोल नंबर्स दैट हैव बीन प्रोवाइडेड they should prepare themselves for the document verification so document verification पे जो लिस्ट बार करथिले पाखापाखी 100 डेज होची 20 ରୁ 29 so exactly पाखापाखी 100 डेज रो टाइम तापरे स्किल टेस्ट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन सरी गला परे पुनी स्किल टेस्ट में समाने पुनी बाहर करले 22 मई रे देन स्किल टेस्ट हेतिला हमर 26 में बेसी समय नथला 4-5 दिन गैप रे फाइनल रिजल्ट आफ्टर 10-15 डेज 10 डेज पाखापाखी 7th June रे फाइनल रिजल्ट बाहरला एंड फाइनल अपॉइंटमेंट वाज गिवन ऑन 26th of July so if you see जो टाइमलाइन जेमती मेंटेन करछन जदी सही हिसाब रे मेंटेन करे ओपीएससी मु भाबुची एथरो टिके दे विल बी बिट एग्रेसिव कारण आम टाइम रे भी देयर वाज सम इशू बिकॉज ऑफ व्हिच द एग्जामिनेशन वाज शिफ्टेड फॉर 1 मंथ किंतु एठी देखंतु एग्रेसिवली दे हैव कंडक्टेड शिफ्ट कले बट विद इन 7 डेज अगेन they conducted the examination beyond my expectations so I think OPSC is bit active this time and they will complete the checking of all the papers within 75 to 80 days so I think by November we will have result October last week किंबा November mid भीतर मैं भाबुची November mid किंबा November last week सुधा we will have final written examination result then document verification पे समाने डाकिबे ओके सो देखिबा को बोले written रो result जतले बाहरिबो आउ skill test हबो exactly देखंतु एडी 29th April आउ 22nd May सो देखिबा को बोले पाखापाखी 20-25 डेज रो गैप सो सही गैप जदि से मेंटेन करके चलती आई वुड से दिस इज अ वेरी आइडियल टाइम माने सेतिकी समय भितर आपण जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन पई भलो भाबरे प्रिपेयर हो जाई पारिबे सो बेसी स्ट्रेस एबेठन होबा दरकार नै किंतु यस पीपल हु आर नॉट कंप्यूटर सेवी जो मानकर कंप्लीटली नॉन टेक्निकल बैकग्राउंड रो समाने somebody who is from arts background and he is just completed BA in some college and he is not regularly using any computer so to say so hand speed नथिबो then regularly semane ei jo Microsoft Word Excel PowerPoint एगुडा सब यूज करू नथिबे सेमानन पई लिटिल बिट ऑफ प्रिपरेशन दरकार टिके हाथ सेट हवा दरकार कीबोर्ड रे अदरवाइज एठी कोनोसी टाइमर न थाए जेमती अदर स्किल टेस्ट उडा करे टाइमर थाए कि आपन को एक्सेल एतिकी समय भितर करिवार अछि वर्ड एतिकी समय भितर करिवार अछि सेमती किछि टाइमर न थाए इंडिविजुअल सेक्शन रे गोटे क्वेश्चन पेपर दे दिया जाए आ क्वेश्चन पेपर को आपन जदि तीनटा क्वेश्चन जानचंती पांचटा क्वेश्चन को आपन पूरा 1 आवर सेही तीनटा क्वेश्चन रे ही सॉल्व कले भी करि परिबे सो सेमती किछि न थाए तो सेथि पई टिके इजियर ए स्किल टेस्ट किंतु अदरवाइज हाथ टिके सेट हवा दरकार जानी थिबा दरकार को सॉफ्टवेयर मते यूज करिया पे पड़िबो तार कोन फंक्शंस रहिछि आगु कहिबी तो सेति पे मु आई वुड सजेस्ट कि एबेठु जदि आपण हाफ एन आवर
to 45 minutes per day देकी चलिए who have confidence that कि आमे लिस्ट रे आसीबो बा हमरो रिटन सिलेक्शन हे जिवो and we have done well, they should prepare now at least सेते बड़ को प्रेशर रहइबोनी रिटन एग्जामिनेशन बाहला पर आ प्रेशर सेते रहइबो नाही. देन आउ गोटे जिनस होची डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन बाहरला पर आपण पाखरे एनफ टाइम रहइबो सेथरे ओरिजिनल सर्टिफिकेट्स आउ आपण फोटोकॉपीज ऑफ योर ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स नै करी जिबे सेठी आपनकर जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होबो समस्तकर गोटे दिन रे होबनी बैच बाय बैच होबो एंड दे विल प्रोवाइड यू रोल नंबर्स फ्रॉम दिस रोल नंबर टू दैट रोल नंबर फर्स्ट सेशन बा फर्स्ट हाफ ऑफ अ डे रे होबो सेकंड हाफ रे आउ किछि लिस्ट देबे इनके बैच बाय बैच से माने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करेंगे एंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन इज नॉट अ वेरी टीडियस प्रोसेस से माने व्हाट दे विल कंपेयर आपनकर जेतोले आपन एप्लिकेशन सबमिट करिसंती एप्लिकेशन रे बहुत सारा डिक्लेरेशन आपन करथांती जेंति आपनकर स्कूल्स कॉलेज परसेंटेज मार्क्स एंड अदर डिक्लेरेशंस जो थाए जेंति आपनकर किछि यू आर क्लेमिंग रिजर्वेशन अंडर स्पेशल कैटेगरीज रो किछि सर्टिफिकेट्स अछि कि नै ए सब जिनस सान डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करती तो खाली एटा एई एप्लिकेशन सहित मेनली ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स को समाने वेरीफाई करती. डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन को नेकी बहुत पिलांक मनरे किछि क्वेश्चन थला जे कंप्यूटर सर्टिफिकेट दरकार कि नै. आई डोंट थिंक इट इज नेसेसरी बिकॉज इन द नोटिफिकेशन इटसेल्फ दे हैव मेंशन्ड ए लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स. से लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स भितर आई डोंट सी दे हैव मेंशन्ड कंप्यूटर सर्टिफिकेट. एनीवे दे आर डूइंग स्किल टेस्ट टू टेस्ट योर नॉलेज इन कंप्यूटर्स. So I don't think it is necessary at all. किंतु आपन को प्रैक्टिस करबा को पड़िबो आ स्किल टेस्ट आपन को पास करबा पड़िबो सेमती आई डोंट थिंक इट इज नेसेसरी कंप्यूटर सर्टिफिकेट हवा निहाती नेसेसरी बोली मु भाबुनी. स्किल टेस्ट आपन माने समस्त जानथिबे इट इज क्वालिफाइंग इन नेचर. आपन 50 मार्क्स रो टोटल मार्क्स रो टेस्ट है जदि 50 मार्क्स रो इफ यू स्कोर 20 देन यू हैव सक्सेसफुली क्वालिफाइड स्किल टेस्ट. स्किल टेस्ट फाइनल मेरिट लिस्ट रे किसी तार कंट्रीब्यूशन नहीं स्किल टेस्ट रो मार्क केबे कैलकुलेट हुए नहीं. आपण यदि 20 मार्क ले देन यू आर गुड टू गो. फाइनली अल्टीमेटली आपनकर जो रिटन रिजल्ट अछि रिटन रिजल्ट रे इफ यू हैव स्कोर्ड सफिशिएंटली हायर ताहले जेहे कि आपण सिलेक्शन हे परिबो. तार मीनिंग होछि कोन जेमति फॉर एग्जांपल इन 2019 500 वैकेंसी वाज देयर ता अगेंस्ट से माने स्किल टेस्ट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन पे अराउंड 936 और समथिंग 900 प्लस से माने डाकी थिले डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन पे. सो दिस टाइम द वैकेंसी इज 796. सो सही हिसाब रे मो भाबुची अराउंड 1500 स्टूडेंट्स विल बी कॉल्ड फॉर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एंड स्किल टेस्ट. तो जेतेबेले फाइनल स्क्रूटिनी सब सरी जीव डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन रे बेसी एलिमिनेशन होनी बहुत कम स्किल टेस्ट रे भी बेसी एलिमिनेशन होनी बहुत कम. सो लेट्स से 1500 रु कमी के 1400 रही जिवे. सो इनिशियल 796 सेवन देखि देबे इंडिविजुअल कैटेगरी वाइज देखि देबे जे प्रथम रु टॉप स्कोरर मान को रखी कि बाकी समस्त को रिजेक्ट कर देबे. सो दैट इज हाउ इट इज डन. ओके सो रिटन ऊपर सब जिंस डिपेंड करछि आपनकर. देन दीज आर रिसोर्सेस फाइनल रिसोर्सेस जोटा आपण जाई कि पढ़ी परिबे बा किसी कर परिबे ए विषय में कहबी. बट बिफोर दैट लेट्स गो टू the question paper. Okay, previous year question paper. So previous year question paper आपन जदि देखिबे this was 2019's paper and the first question was a PowerPoint question. Okay, so PowerPoint question ले कोन जे PowerPoint presentation है we prepare various slides. से slide रो formatting हमें करू, slide रो background set करू, fonts रो different design set करू, effects set करू, then बहुत सारा जिंस अछि. तो सही सब जिंस को आपन देखिया पड़ो. If you go to a PowerPoint presentation, let's say this is the PowerPoint presentation, file केमती start करिबा को हुए केमिति सेठी आपन को टेबल इंसर्ट करिबा को हुए टेबल केमती फॉर्मेटिंग करिया को हुए. you have to explore these options. insert रे कोन कोन रहिछि clip art कोन word art कोन shapes कोन charts कोन चार्ट रे केमिति इफ आई हैव नंबर ऑफ डाटा चार्ट रे केमिति रिप्रेजेंट कर परिबी. सो एई ऑप्शंस गुडा को आपन को वेरीफाई करबा अछि. सो व्हाट यू कैन डू इज यू कैन मेक ए डेमो पावरपॉइंट प्रेजेंटेशन जोटी चार पांचटा स्लाइड थिबो रैंडम किसी टेक्स्ट सेठी आपन टाइप कर देबे. देन यू विल स्टार्ट एक्सपेरिमेंटिंग. यू विल प्ले विथ these options. डिजाइन ने कोन कोन ऑप्शन अछि कोन कोन मु करि परिबी, ट्रांजिशन कोन, स्लाइड शो कोन, एनिमेशंस कोन,
जोटी किसी डाउट हो यू कैन गूगल इट आउट और यू कैन जस्ट गो एंड सी इन द माइक्रोसॉफ्ट लाइब्रेरी भी आपण तार हेल्प आपन को मिल जिवो ओके सो फर्स्ट थिला पावर पॉइंट क्वेश्चन परे आमर थिला आई थिंक एक्सेल एटी एक्सेल रे देखो तो जेमिति आपनकर स्ट्रक्चर अछि एक्जेक्टली आपन को एक्सेल रे आपन को सेमती ही स्ट्रक्चर करिया पड़िबो इफ समथिंग हैज बीन रिटन इन कैप्स देन कैपिटल लेटर करिया पड़िबो एटी जंतु देखंतु जेंति कॉमा देखि लिखाइ छि नंबर छुडा को सेमती कॉमा देखि लिखिया पड़िबो पुणी ये टोटल्स अच्छी एपटे टोटल अच्छी सो बेसिकली इन दिस क्वेश्चन यू विल यूज ओनली वन फॉर्मूला दैट इज सम और ऑटो सम किंतु देयर कैन बी अदर क्वेश्चंस जोटी वेरियस टाइप्स ऑफ फॉर्मूला यूज हम एक्सेल रे सो से एक्सेल को भल पढ़ा दरकार एंड नॉट ओनली दिस आई वुड लाइक टू से दिस कि नॉर्मली जिते आप काम करेंगे एज एन ASO आपणकर पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन आई थिंक सब लिस्ट यूज हम एक्सेस इट विल नेवर बी यूज्ड एंड बाकी दीटा जो रहा वर्ड एंड एक्सेल ये दीटा मेनली यूज हम एक्सेल रो यूज आई थिंक मोर देन वर्ड कारण वर्डटा इजिली नॉर्मली जो टाइप कर शिखी बट एक्सेल देयर इज लॉट टू लर्न आउ एक्सेल यूज हम मान नॉर्मल डाटा शीट मेंटेनेंस यूज हुए जदि आप फंक्शंस जानी एडवांस फीचर्स जानी एक्सेल रे योर लाइफ विल बी इजियर एट टाइम सब बेले दरकार नहीं बट डेफिनेटली आप ASO रे सिलेक्शन ना भी एनीवेयर यू गो इन द वर्ल्ड I think data is the main thing जोटा सब ऑर्गेनाइजेशन मेंटेन करछन एंड that is very very important on the part of the employee to store data and to use it effectively सेति में एक्सेल is one of the wonderful tools जोटा प्राय सबुटी यूज होए तेणु जेते जदि आपण सिखिबे there is nothing wrong in learning the advanced features जोटा आपको हेल्प करबो then the next question was word Microsoft Word एतिर आपको एक्जाक्टली सब जिन टाइप करने पड़ो जो जमती लेटर रे जोटा अच्छे सेटा जमती फॉर एग्जांपल इन द मिडल ऑफ द सेंटेंस आपन देखिबे एटा लिखा छै एडवांस्ड सो इट जदि स्मॉल ए आपन लिखि देबे देन इट विल बी कैलकुलेटेड इट विल बी टेकन एज अ मिस्टेक आपन भाबंतुनी जे एटी एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट लिखा छै माने मो एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एटी मो हिसाब रे लिखि देबी एटी ए आर और पी आपन कैप्स करबे पड़ो जेमिति अछि एक्जाक्टली एटा को कॉपी करिवे माने टाइप करिकि इन्वर्टेड कॉमास जदि स्टार्टिंग रे अछि तने इन्वर्टेड कॉमास देबे सो तापरे फॉन्ट रो साइज अलाइनमेंट पेज बॉर्डर्स देन आपनकर कोटा कैप करे अछि स्मॉल करे अछि फॉन्ट रो कलर चेंज करे अछि वेरियस फॉर्मेटिंग पे आपनको इंस्ट्रक्शन अछि यू कैन डू द थिंग जोटा आपनकर इंस्ट्रक्टेड थिबो सेमती जेमती आपण पावर पॉइंट रे एक्सपेरिमेंट करिवे सेमती वर्ड को भी जाई कि वर्ड रो वेरियस ऑप्शन को एक्सप्लोर करिवे किछि रैंडमली यू विल जस्ट टाइप then you will start formatting it you will try to explore each and every option that is available to you okay then next part ko jiba next part re then there was access question access is not a very frequently used database kaiki na jehetu eta Microsoft Office package re asuchi that is why it is being tested otherwise there are various good improved version of database that is available in real world that is Oracle database then MySQL then there are others also जोटा कि real time organization use हुए normally I have never seen the use of access ଆଉ ଏଠି ତ କାମରେ ମୁଁ ଭାବୁନି ସେମିତି କେବେ ବି ଦରକାର ପଡ଼ିବ 99% chance is there कि you will never use access in your life okay but still it is there we have to prepare so similar things applies to access also सेथिपई किछि फंडामेंटल्स आपनको दरकार सेते मो रिसोर्स देबे फॉर एग्जांपल इट लिखा छै प्राइमरी की इफ यू डू नॉट नो व्हाट इज प्राइमरी की अपन प्राइमरी की सेट केमती करिवे केमती एटा को प्राइमरी की सेट करिवे तनो प्राइमरी की कोन जानिबा दरकार ता पूर्व डेटाबेस कोन जानिबा दरकार डेटा शीट कोन जानिबा दरकार केमिति डाटा टेबल्स गुडा कर डेटाबेस भीतर रहे समान को भीतर लिंकिंग केमती हुए बेसिक फंडामेंटल जो रहितला ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग कांसेप्ट्स इंजीनियरिंग पिला माने बेसी भल से बुझी पारुतबे व्हाट आई एम टॉकिंग टू व्हाट आई एम रेफरिंग टू टॉकिंग अबाउट तो यहाँ वेरी वेरी इंपोर्टेंट किसी फंडामेंटल कॉन्सेप्ट थे ही आप देखिए बट एबे यथेष्ट समय अच्छी तेणु भय कर किसी नहीं आराम से आपरे ओके सो 5 नंबर क्वेश्चन होची डिस्प्ले द पीसीस आईपी एड्रेस डीएनएस सर्वर एंड डिफॉल्ट गेटवे दिस आर इंटरनेट ऑप्शंस को जाके आप खोजिक आराम से पाइपर आई कैन शो यू हियर ऑल्सो यू गो टू कंट्रोल पैनल देन नेटवर्क एंड टास्क को जी देन जो नेटवर्क अच्छे से देन यू विल गो टू डिटेल्स गले यू विल फाइंड एवरीथिंग हियर एटार स्क्रीनशॉट नहीं आपको कर देखो IPv4 एड्रेस अच्छी डिफॉल्ट गेटवे अच्छी डीएनएस सर्वर अच्छी
सो जो मैंने जानी से मैंने इजिली करेंगे, जो मैंने जानी ना टे जानवा को पड़ो। कंप्यूटर वेरियस ऑप्शंस मेनली कंट्रोल पैनल रे जाकि आप इंटरनेट ऑप्शंस गुड़ा खेले खेल देखिले तारी भितर ही मेनली क्वेश्चन आसो, ताठू अधिक किसी क्वेश्चन आसपार ना। सो फाइनल एक्टिविटी यह थी आप जो 3टा प्रोजेक्ट आप कले से 3टा प्रोजेक्ट को लेकिन गोटे जगह आप सेव करेंगे, गोटे फोल्डर क्रिएट करके डेस्कटॉप रे सेठी सेव करेंगे एंड यू विल गिव प्रिंट आउट और प्रिंटेड गुड़ाक फाइनाली सबमिट करेंगे। दिस इज व्हाट ऑल अबाउट। गोटे घंटा भितर आपन 5टा क्वेश्चन अच्छी और 5टा क्वेश्चन ईच क्वेश्चन कैरीज 10 मार्क्स। सो से हिसाब से आपको मार्किंग हम। सो एमती भावी जे 2टा क्वेश्चन जब मुझे करदेली 20 मार्क्स हो गला और पास कर 2टा क्वेश्चन पूरा निर्भुल भाव में जब करेंगे ताहले जाकि, बट आई वुड से फॉर द सेफर साइड यू शुड अटेम्प्ट गोटे घंटार परीक्षा देवार अच्छी, तेणु जिते मैक्सिमम आप स्कोर करेंगे बेटर। 20 जदिओ यू नो पासिंग मार्क, बट जिते आप अधिका स्कोर करेंगे बेटर। गोटे भल एक्सपीरियंस रही, गोटे कॉन्फिडेंस मिल जहाँ आप यूटिलाइज करेंगे टाइम ड्यूरिंग द प्रिपरेशन, ताकू यूटिलाइज कला भाया परीक्षा लगे। सो इट इज बेटर। देन विल गो टू सोर्सेस। सो रिसोर्सेस मुझे 2टा, गोटे हूँ W3 स्कूल्स, यार लिंक मुझे डिस्क्रिप्शन में देदेवी। यू कैन गो एंड यू कैन जस्ट कॉपी पेस्ट हियर इन द ब्राउजर एंड यू कैन वॉच। ये देखो यही साइटा एक्सेल शिखापी इट इज वन ऑफ द बेस्ट साइट्स, कहीं बेसिक सहित वेरियस फॉर्मूला एक्सेल रो फॉर्मेटिंग केमती डेटा एनालिसिस हुए, केमती फिल्टर अरेंज करा जाए, सब जिन एक्सेल रो रही। एगुड़ाक एडवांस फीचर्स टेबल रो पाइवट टेबल केमती सेट करा जाए कौन से जानवा तो दरकार नहीं, किंतु देखो दिस इज वेरी वेरी इंपोर्टेंट। एक्सेल फंक्शंस एंड रो काम कौन, एवरेज काम कौन। एवरेज तो एमती नॉर्मल डेटा शीट रे भी यूज हुए, टोटलिंग कर सारा पर एवरेज बहुत जगह पचार देवार प्रोबेबिलिटी रही। दिज आर कंडीशनल फॉर्मेटिंग जमी काउंट इफ एल्स इफ एल्स क्लॉज आम लगे एक्सेल रे आम करें। सो सम इफ दिज आर ऑल सम देखते जोटा मुझे कहते सम बा ऑटो सम यूज करा जीवो। दिस फॉर्मूला दिस इज वेरी वेरी एप्रोप्रिएट फॉर लास्ट ईयर्स क्वेश्चन, किंतु सम इफ हो गले ये कंडीशनल फॉर्मेटिंग बा कंडीशनल डेटा एनालिसिस बोली कहजिवो। सो दिस इज वन ऑफ द बेस्ट साइट्स फॉर एक्सेल। देन वी हैव अनदर यूट्यूब चैनल जोटी आपण प्रत्येकटी सॉफ्टवेयर रो यू कैन गेट द एंटायर वीडियो। लाइक फॉर एग्जांपल आई विल टाइप हियर tutorials point Excel. So you will get here 103 videos. Okay, similarly you can search out Word, Access, everything you will find. जदि ये वीडियो देखिए पूरा पढ़ेबे and you will make notes of what you learn from these videos or practice enough, सेमती किसी भी क्वेश्चन आसबनी जोटा आप करें। सो आई थिंक वर्ड रे बोधे 40-50टा वीडियो अच्छी, देन पावर पॉइंट भी सेमती 30-40टा वीडियो अच्छी। सो आई थिंक दिस इज एनफ। आठू अधिका करवा आपको दरकार भी नहीं। ये लिंक्स गुड़ाक मुझे देदेवी, तो यू कैन गो एंड यू कैन वॉच द वीडियो, यू कैन लर्न फ्रॉम देम। ओके, सो दैट ब्रिंग्स अस टू द लास्ट स्लाइड। सो एतिकी मत इनफॉरमेशन दबार थिला। यथेष्ट समय अच्छी बर्तमान हाफ एन आवर भी जब डेली यूज करेंगे ताहले स्किल टेस्ट बेलू आप पूरा प्रो हो जाइए, पूरा बढ़िया से प्रिपेयर हो सारी। सो थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। अंटिल देन बाय बाय।